Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 14, The Tempest. The Tempest. So the writer of the story writer is William Shakespeare. William Shakespeare. So have you read the tale of Robinson Crusoe? He was shipwrecked on a deserted island and survived for many years by adapting to the harsh environment around him. If you were stranded on a remote island, how would you cope with the lack of basic necessities and the isolation? Share your ideas with the class. So The Tempest, however, is a survival story of a very different kind. टेम्पेस्ट जो है वो एक सर्वाइवल स्टोरी है, मतलब बहुत अलग तरीके का. अ मैन लेफ्ट टू पैरिश एट सी विथ हिज इन्फेंट डॉटर. एक आदमी पैरिश के लिए निकल गया सी में से एक अपनी छोटी सी बच्ची के साथ. इन्फेंट डॉटर यानी कि छोटी सी बच्ची. Uses his knowledge of magic to not only survive but also bring his enemies to heel many years later. Read on to see how his quest for revenge brings a surprisingly happy change in lives of the characters. So there was a certain island in the sea. एक आइलैंड था सी में. देयर वॉज अ सर्टेन आइलैंड इन द सी, द ओनली इनहेबिटेंट्स ऑफ विच वर एन ओल्ड मैन हुज नेम वॉज प्रॉस्पेरो. एंड हिज डॉटर मिरिंडा. उसकी डॉटर का नाम था मिरिंडा. अ वेरी ब्यूटिफुल यंग लेडी. शी केम टू दिस आइलैंड सो यंग that she had no memory of having seen any other human face than her father's. वो इतनी यंग थी, इतनी छोटी थी, तभी आके उसने वो आइलैंड विजिट किया कि उसको कुछ याद ही नहीं. इनफैक्ट उसको सिर्फ उसके डैडी का फेस याद है. वहाँ पे जितने भी लोग आइलैंड पे थे उनका किसी का कुछ याद नहीं है. दे लिव्ड इन अ केव और सेल. तो लोग एक केव में, गुफे में रहते थे. मेड आउट ऑफ रॉक. किससे बना हुआ था वो? रॉक. इट वॉज डिवाइडेड इंटू सर्वल अपार्टमेंट्स. नॉलेज हैड हेल्प हिम रिलीज द कैपिटिव यानी कि इम्प्रिजन्ड स्पिरिट्स ऑफ द आइलैंड हु वर एवर आफ्टर ओबीडियंट टू द विल ऑफ प्रॉस्पेरो. Of this gentle spirits, Ariel, who was invisible to all eyes, but Prosperous was the chief. मतलब वहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट्स थे, इविल स्पिरिट्स थे जो प्रॉस्पेरो को दिखाई देते लेकिन दूसरों को नहीं. By means of this powerful spirits, Prospero could command the winds and the waves of the sea. Yes, he had a powerful spirits. उसके वजह से ही could command, मतलब वो किसी भी पानी या हवा को भी ऑर्डर दे सकता था. By his order they raised a violent storm. वो अगर ऑर्डर करता था एक बहुत ज़ोरदार तूफान भी आ जाता था. In the midst of which he showed Miranda a large ship struggling with a wild sea waves. उसी के बीच में, सी के बीच में उसने दिखाया अपने बेटी को, मिरिंडा को, कि एक शिप जो है is struggling with sea waves. He told her it was full of living beings like themselves. उसने क्या बोला कि वो पूरे लोगों से भरा हुआ है, हमारे जैसे लोगों से, लिविंग बींग्स से भरा हुआ है. Hearing which Mirinda was greatly distressed. ये सुनते ही वो एकदम परेशान हो गई, डिस्ट्रेस्ड हो गई. She implored यानी कि begged. उसने भीख मांगा अपने डैडी के पास. To have pity on the poor. उसने बोला कि आप उन पे प्लीज दया दिखाइए. Souls and not let them perish. And please let not them perish.
To which Prospero replied, "There is no harm done, Mirinda. Your question of who you are and where you came from." मिरिंडा को उसके डैडी बोलते हैं कि कोई भी हार्म नहीं होने वाला उनको. I have so ordered it that no person in the ship shall receive any hurt. बोलते हैं कि मैंने ऐसा एक ऑर्डर दिया है कि शिप में कोई भी इंसान जो हो किसी को भी कुछ चोट ना आए. They shall not receive any hurt. I have done all this to address your question of who you are and where you came from. So 12 years ago, Mirinda continued Prospero, I was Duke of Milan and you were Princess and my only heir. I had a younger brother whose name was Antonio. I often left the management of my state affairs to your uncle while I buried myself in my books and dedicated my whole time to be bettering of my mind. What happened? What was he telling? Ki I was the Duke of Milan and you were the princess and my only heir. I had a younger brother. He had a younger brother. उसके छोटे भाई थे जो जिनका नाम एंटियोनी था, जो ऑफ्टनली उसको मैनेजमेंट के लिए छोड़ देते थे. So I buried myself in my books and dedicated my whole time. बोलते हैं कि मैंने अपने आप को बुक में दफना दिया और अपना पूरा जो टाइम है किसको डेडिकेट किया है? बैटरिंग ऑफ माई माइंड. माई ब्रदर एंटिनियो बीइंग thus a possession of my power began to think himself the duke indeed. बोलते हैं कि मेरा पावर को लेते हुए he was thinking himself a duke. The opportunity awakened in his bad nature a proud ambition to deprive me of my dukedom. He soon effected यानी कि made something happen. Effected this with the aid of King of Naples, who was my enemy. बोलते हैं वो किसके साथ इफेक्ट होने वाला है? किंग नेपल्स के साथ, जो उसका एनिमी था. एंटोनियो कैरिड अस ऑन बोर्ड शिप एंड व्हेन वी वर सम लीग्स आउट एट सी ही फोर्स्ड अस इनटू अ स्मॉल बोट. उसने फोर्स किया कि हमें एक स्मॉल बोट में बैठने के लिए. विदाउट अ टैकल सेल और मास देयर ही लेफ्ट अस एज ही थॉट टू पैरिश. But a kind lord of my court, one Gonzalo, who loved me, he secretly placed in the boat water, provision, apparel, and some books which I prize above my dukedom. "Oh, my father," said Mirinda, "what a trouble must I have been to you then." वो बोलती है कि फिर तो मैं आपके लिए कितनी तकलीफ़ दी होगी ना मैंने आपके लिए. "No, my love," said Prospero. "You were a little cherub यानी कि a pretty child, that did preserve me. Your innocent smiles made me bear up against my misfortunes. Our food lasted till we landed on the desert island." बोलते हैं हमारा जो खाना था हम डेजर्ट आइलैंड तक पहुँचने तक हमारे लिए काफ़ी था. Since when chief delight has been in teaching you, Mirinda. "Heaven thank you, my father, my dear father," said Mirinda. "Now pray यानी कि a polite addition to a request or an instruction. Tell me, sir, your reason for raising this sea stone." "Know then," said her father, "that by means of the stone my enemies, the King of Naples and my cruel brother, are cast ashore." Cast ashore यानी कि thrown onto the shore by the waves. "That by means of upon this island, having so said,
Prospero gently touched his daughter with his magic wand and she felt fast asleep. Prospero ने क्या किया, अपने मैजिक वांड से अपने बेटी को टच किया ताकि उसे बहुत जल्दी से नींद आ गई. Ariel just then presented himself before his master. Ariel ने फिर अपने मास्टर के सामने उसे प्रेजेंट किया. To give an account of the tempest. क्या करने के लिए, टेम्पेस्ट का अकाउंट देने के लिए. एंड हाउ ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ द शिप्स कंपनी यानी कि पैसेंजर्स एंड क्रू. ही गेव अ लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉर्म. उसने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया अबाउट स्टॉर्म, अबाउट तूफान के बारे में. And of the terrors of the mariners, and how the king's son Ferdinand was the first who leaped into the sea. Ferdinand's father thought he saw his dear son swallowed up by the waves and lost. उसने बोला कि कैसे टेरर्स को भी मैंने कैसे मराइन के अंदर ही ये कर दिया, और सबसे ज़्यादा तो पहला तो फर्डिनेंड का जो बेटा था वो खुद गिर गया पानी के अंदर, और फर्डिनेंड देखते ही रहेगा कि उसके बेटे को कैसे सी के वेव्स ने खा लिया. बट ही इज़ सेफ, सेड एरियल, in a corner of the easel, sitting with his arms folded, sadly lamenting the loss of the king. The father who he concludes drowned. He who concludes drowned. Bring him hither, said Prospero. My daughter must see this young prince. क्या बोलता है, ब्रिंग हिम इधर, यहाँ पे लेकर आओ, मेरी जो बेटी है उसको देखेगी. वेयर इज़ द किंग एंड माई ब्रदर. उससे ही कहाँ पे है, किंग और मेरा भाई कहाँ है. आई लेफ्ट देम, आंसर्ड एरियल, सर्चिंग फॉर फर्डिनेंड, whom they have little hopes of finding, thinking they saw him perish. Of the ship's crew not one is missing, though each one thinks himself the only one saved. सभी लोग क्या सोच रहे थे कि सिर्फ उसमें से एक ही बचा हुआ है. The ship, though invisible to them, is safe in the harbor. Invisible था उनके लिए शिप, लेकिन फिर भी सेफ था हार्बर में. Ariel, said Prospero, thy charge यानी your duty is faithfully performed. आपका जो ड्यूटी था ऑनेस्टली परफॉर्म किया. बट देर इज़ मोर वर्क येट, लेकिन उधर और भी ज़्यादा काम है. एरियल देन वेंट टू वेयर ही हैड लेफ्ट फर्डिनेंड एंड फाउंड हिम स्टिल सिटिंग ऑन द ग्रास इन द सेम melancholy यानी कि सैड एंड डिफीटेड पोस्चर. He then began singing and Ferdinand followed in amazement at the sound of Ariel's voice, till it led him to Prosper and Miranda, who was sitting under the shade of a large tree. Now Miranda had never seen a man before except her own father. अभी मिरिंडा ने अपने फादर के अलावा किसी आदमी को देखा ही नहीं था. Miranda said Prospero, tell me what you are looking at yonder. Yonder यानी कि over there. Oh father, said Miranda in a strange surprise, surely that is the spirit, Lord. How it looks about, is it a spirit? Miranda बोलती, क्या वो spirit है? शायद ही वो spirit हो सकता है. No girl, answered her father. उसके father ने बोला कि नहीं. No girl, it eats and sleeps and has sense such as we have. बोलते कि वो खाना भी खाता है, पानी भी पीता है, सोता भी है और सेंस भी है अपने जैसे. This young man you see was in the ship. बोलते जो ये young man जो तुमको दिख रहा है यही शिप में था. He has lost his companions and is wondering about to find them. उसने अपनी जो कंपनी जो साथ में लोग थे उनको खो दिया है और उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है. Miranda, who thought all men had grave faces and grey beards like her father, was delighted with the appearance of this beautiful young prince. मिरिंडा हमेशा सोचती थी सारे यंग लोग, सारे मेंस जो है आदमी लोग को कैसे
ग्रे कलर के बाल हो सकते हैं, ग्रे कलर के बियर्ड्स है, फेस ऐसे ग्रेव्ड है। लेकिन ये प्रिंस को देख के वो एकदम शॉक में थी कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या। Ferdinand, seeing such a lovely lady on the deserted island, thought Miranda was the goddess of the place. फर्नैंड ने जब देखा मिरिंडा को, ब्यूटीफुल लेडी है यहाँ पे, तो उसने सोचा कि ये शायद ये आइलैंड की गॉडेस है। एंड एज सच ही बिगेन टू एड्रेस हर। शी टिमिडली आंसर शी वॉज नो गॉडेस। उसने आंसर किया कि मैं यहाँ की गॉडेस नहीं हूँ, बट अ सिंपल मेड, मैं यहाँ की सिंपल नौकरानी हूँ। प्रोस्पेरो प्लेनली परसीव्ड यानी कि रियलाइज्ड दे हैड, as we say, fallen in love at first sight, but he resolved to throw some difficulties in their way. Prospero addressed the prince with a stern air and accused him of being a spy. उसे एक स्पाई होने का उस पर क्लेम करता है। When Ferdinand drew his sword to defend himself, Prospero waved his magic wand and fixed him to the spot where he stood, so that he had no power to move. जैसे ही वो फर्डिनेंड वहाँ पे अपना स्टिक तलवार निकालता है, तो वैसे ही क्या करता है प्रोस्पेरो, उसका मैजिक वॉन्ड निकाल के उसे वहाँ पे ही खड़ा कर देता ताकि ही कैन नॉट मूव। कम ऑन यंग मैन, सेड प्रोस्पेरो टू द प्रिंस। प्रोस्पेरो बोलता है प्रिंस को, कम ऑन। ही कमांड फर्डिनेंड टू पाइल अप some heavy logs of woods, king's son not being much used to the laborious work. Miranda soon after found the prince almost dying with a fatigue यानी कि exhaustion. जो प्रोस्पेरो है उसने क्या किया, बहुत बड़े बड़े लकड़े जो रहते हैं उसके ऊपर डालने की कोशिश की अपने जादू से, लेकिन फिर बाद में देखा कि सांस नहीं मिलने की वजह से वो जो प्रिंस था वो मरने के कतार पे था। Instead of a help, Miranda became a hindrance, for then began a long conversation, so that the business of a log carrying went on very slowly. Prospero, who had given Ferdinand this task, merely as a trial to his love. Was not at books, and his daughter supposed, but was standing by them invisible, to overhear what they said. उसने उसको ऐसा काम दे दिया था हैवी लॉग्स उठाने का जो उसने कभी किया नहीं था। ये काम करते करते वो एग्जॉस्ट होते जा रहा था, जिसकी वजह से वो मर भी सकता था। तो जो प्रॉस्पेरस की बेटी उसने देखा, तो उसने जाके उसको कुछ बोला। Pleased by their devotion to each other, Prosper smiled and nodded his head as if to say, this pleased by the goes on exactly as I could wish. My girl will be queen of Naples. फिर उसने देखा ये सारी बातों को, तो उसने बोला कि एग्जैक्टली मैं जैसा सोचता है, अभी मेरी जो लड़की है वो क्वीन ऑफ नेपल्स बनेगी। Fear nothing, my child, said he, appearing before the couple. I have overheard and approve of all you have said. All your punishments were but trials of your love. तुम्हारे जो पनिशमेंट है लेकिन वो एक तुम्हारे प्यार के लिए एक ट्रायल था। He then, telling that he had business which required his presence, desired they would sit down and talk together till he returned. And his command, Miranda seemed not at all disposed to disobey. When Prospero left them, he called his spirit Ariel. जब वहाँ से प्रोस्पेरो निकल गया तो उसने स्पिरिट को एरियल को बुलाया, who quickly appeared before him. जो उसको बुलाते ही तुरंत वो उसके सामने अपीयर हो गया। Eager to relate what he had done with Prospero's brother and the king of Naples, Ariel said he had left them almost out of their sense with fear at the strange thing he had caused them to see and hear. He had reminded them their cruelty in driving Prospero from his dukedom,
and leaving him and his infant daughter to perish in the sea. They now believed their current misfortune was a result of their evil deed. तो जो करंटली जो हो रहा था वो लोग सोचने लगा कि अभी उन्होंने evil जो बुराई किया वही चीज़ें उनके साथ हो रही है. The king of Naples and Antonia repented the injustice they had done to Prospero, and Ariel told his master he was certain their penitence यानी a feeling of being sorry, of regretful for one's misdeeds, was sincere, and that he could not but pity them. Prospero, moved by Ariel's account, said, "If you who are but a spirit feel for their distress, shall not I, who am a human being like themselves, have a compassion on them? Bring them hither quickly, my dainty Ariel." Ariel soon returned with the king, Antonia, and old Gonzalo in his train, यानी कि following behind him, who had followed him, wondering at the wild music he played in the air to draw them to his master's presence. इतना जोर का म्यूज़िक प्ले होता है ताकि वो उनको अपने मास्टर के प्रेजेंट में लेके जा सके, प्रेजेंस में लेके जा सके. फिर क्या हुआ? ग्रीफ एंड टेरर हैड नो सो स्टूपेफाइड यानी कि greatly shocked their senses that they did not know Prospero at first. वो लोग प्रोस्पेरो को फर्स्टली नहीं जानते थे. He first discovered himself to the good old Gonzalo. उसने अपने आप को अच्छा एक आदमी गोंजालो दिखाया, सबको डिस्कवर किया, calling him to preserver in his life. And then his brother and the king knew that he was the injured Prospero. Antonio, with tears and sad words of sorrow and true repentance, उसका भाई जो था वो रिपेंट करने लगा, पश्चाताप करने लगा. With a true repentance he was crying, and with the sad words he was saying, implored his brother's forgiveness, and the king expressed his sincere remorse for having assisted Antonio to depose यानी कि remove from power using force of trickery. His brother Prospero forgave them, and upon their engaging to restore his dukedom, he said to King of Naples, "I have a gift in store for you could exceed the joy of the father and the son at this unexpected meeting." For they each thought the other drowned in the storm. क्योंकि दोनों एक दूसरे को सोच रहे थे कि ये शायद स्टोम में मर गया, तूफान में चला गया, दूसरा सोच रहा था उसके डैडी चले गए. "Oh wonder," said Miranda, "so many noble creatures there are here. It must surely be a brave new world that has such people in it." वो बोलती है कितना अच्छा एक सिटी है जहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग हैं. It must be a new world, बोलती है एक नया शहर हो गया, नया वर्ल्ड हो गया, नई दुनिया होगी. The king of Naples was astonished at the beauty of excellent grace of the young Miranda, as his son had been. "I will be her father," said the king, "but oh, I must ask my child forgiveness." "No more of that," said Prospero. "Let us not remember our troubled past, since they so happily have ended." Prospero now told them that their ship was safe in the harbor, and the sailors all on board, and that he and Miranda accompanied them home the next morning. He buried deep in the earth his magical books and wand, for he was resolved never more to make use of this magic art. उसने क्या किया? बहुत अंदर डीप में बरी कर दिया अपने मैजिकल बुक्स को और अपने मैजिक वर्ड को, ताकि वो इस मैजिक आर्ट को वापस यूज़ ना कर पाए. And having thus reconciled
With his brother and the King of Naples, nothing now remained to complete his happiness but to revisit his native land and lead a peaceful life. As for Ariel, before Prospero left the island, he dismissed Ariel from his service to the great joy of that lively little spirit who went about the island singing in his joy. Where the bee sucks, there is suck I. In a cowslip's bell. Cowslip's bell यानी कि in the inner petals of the deep yellow flowers of the cowslip's plant. There I crouch while owls do cry. On the bat's back I do fly. After summer merrily, merrily, merrily shall I live now, under the blossom that hangs on the bough. Adapted from Tales of Shakespeare by Charles and Mary Lamb.